5 బీమా ఇదిగో సిల్వర్ జాయిల్ కాసు సిల్వర్ 2 సిల్వర్ 2 అదొక కాయిన్ ఫోర్ ఇంకేమో ఏడేమో ఆండ్రాయిడ్ మూడేమో ఐఫోన్ ఒక కీప్యాడ్ పెట్టే కార్డ్స్ అన్న కార్డ్స్ మెయిన్ కదా. వెన్నీళ్ళు ఇచ్చారు తాగడానికి వెన్నీళ్ళు ఇచ్చారు. చెప్తాను అన్న ఎలా ఇచ్చారంటే పిక్చర్ దోస్ అకౌంట్స్ ఆర్ సాలరీడ్ అకౌంట్స్ అన్నట్టు, సాలరీ పర్పస్ కోసం ఓపెన్ చేసిన అకౌంట్స్ అన్నట్టు చేసి దాని ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండ్ దాని ద్వారా లోన్స్ చాలా మటుకు త్రూ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఆల్సో అకౌంట్ అనాలిసిస్ ఇంకా వేరే బేసికల్గా ఈ కేసు చేసిన మటుకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా. సో దానిలోని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి నీలం పవన్ కుమార్ అనే వ్యక్తి is the person who is behind this. Yeah. So this is a case of mule accounts. There's one person called Neelam Pavan Kumar who has committed fraud in the banks. Actually, we got a complaint from Axis Bank account that some persons, they don't know that it is a single person who have done it. Some persons have organized and they have taken accounts, around 26 accounts from their banks, and all were supposed to be savings bank accounts, and all are salaried accounts. And by taking these salaried accounts, they have taken loans on these accounts, particular accounts, which mule accounts which they have opened, and then also they have taken credit card. After taking credit cards and loans, they have evaded the loans, and in that manner they have cheated around 5.6 crores to the Axis Bank in 3 different branches of Vijayawada. So in this case, once we got the case, we have investigated the case, and through technical evidence and also through human intelligence, we could trace back, and it was found to be Neelam Pavan Kumar is a single person who has done. But for opening the mule accounts and all, he has taken assistance of some of his acquaintances, and he gathered the people to open the bank accounts. Also, the PAN cards, whatever is the identity useful for opening the bank accounts, he has forged the PAN cards of some other person. He has done Photoshop and forged the PAN cards, and then he got opened those bank accounts, and by using these bank accounts, he has cheated these banks up to 5.6 crores. Having any sleuths on the bankers from this side, ma'am, in this crime? Pardon? Have you got any sleuths from the bankers' involvement in this crime? Actually, as of now, we have only investigated about his role, about this person's role. I don't think that there might be banker's role, but anyways, that aspect we have to still verify as to how, without any verification, they have opened, they have facilitated opening of so many bank accounts, and also forwarding so much of loan amount to all these banks without verification. That we'll further investigate. What are the sections imposed on him? Forgery sections were imposed. Identity theft IT Act 66C, 66D was imposed. Forgery sections were also imposed, and after investigation we'll add some more sections. And also organized crime, because he has taken help, and already there are a few cases against him in which he was charge sheeted. So we have included that section also. So based on that section, we'll be sending him to remand. Okay, ma'am. As a cybercrime officer, what is your message to the common man?
generally don't open unknown links first thing. Don't go for unknown numbers. Don't attend unknown numbers. If at all that number is not known to you, you please don't attend to that. And don't open any links and don't open any APK files. If at all somebody is luring you with greater investments, greater returns on investments, don't go for that investment frauds. And don't get cheated unnecessarily online through e-commerce frauds also. If at all, if you have any sort of inconvenience with regard to this, or if you are you feel that you are a victim of cyber fraud, you are always welcome to this cybercrime police station, or for immediate effect you have to call, and you can call 1930, which is a toll free number, or you can register yourself or log in to this cybercrime reporting portal www.cybercrime.gov.in. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ವಹಿಸಿ ಆ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟದಾರರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಾಗಾಟವಾಗಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನೆ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವುದು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಂಥ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ದೂರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡದೆ ತಮಗೆ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಣ ಆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಯುವ ಜನತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತಾರೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಜೀವನ ಏನಾಗಿದೆ, ರೈತರ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓರಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಲೀಗಲ್ ಸರ್, ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಕರೆದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು ಮಾಲೀಕರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸತೆ ಆ ಮಾಲೀಕರು ಅವರಿಗೆ
ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಿಡು, ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ CL ಬಾರ್ 2, CL ಬಾರ್ 7, CL ಬಾರ್ 9 ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ಕರಿಗೆ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್? ಯಾವುದೇ ಬಾರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. CL2 ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು Samavesha, you see, already I expressed my opinion about this is a state level celebration of third year of the government. So here we expect more than 1 lakh people, but the place may be congested, that is different. So there are people who are Palanubhavi, the beneficiaries who are attending here, so they will all adjust and no problem. This Samavesha will be a grand success. I wish for that. Reaction about Modi foreign trips. See, being a Prime Minister of the country, he has to go for the visit of the other nations also. They are also coming. We are also going. There is nothing new in that. Sir, are you welcoming that Modi's that consumption of petrol and diesel? Not an order. It is not an order. It is not an order. It is only a suggestion to the people of the country. It is up to the people to accept or reject. Sir, another one that Congress, BJP MLAs Jyoti Ganesh and Suresh Goda were telling that tomorrow's program we are boycotting that program because of... No. In his presidency only the function is to be conducted here. But they were telling boycott. No, it is up to them. It's a politically, if they should not view this celebration as a party or keeping the opposition party away from the occasion. We are all inclusive of all the opposition MLAs and the functionaries also. This is celebrating this. Jyoti Ganesh itself, he himself is presiding over the function. What else he requests then? Thank you, sir. Thank you. Samavesha, you see, already I expressed my opinion about this is a state level celebration of third year of the government. So here we expect more than 1 lakh people, but the place may be congested, that is different. So there are people who are Palanubhavi, the beneficiaries who are attending here, so they will all adjust and no problem. This Samavesha will be a grand success. Reaction about I wish for that. Reaction about Modi foreign trips. See, being a Prime Minister of the country, he has to go for the visit of the other nations also. They are also coming. We are also going. There is nothing new in that. Sir, are you welcoming that Modi's that consumption of petrol and diesel? And You see, it is not an order. It is not an order. It is not an order. It is only a suggestion to the people of the country. It is up to the people to accept or reject. Sir, another one that Congress, BJP MLAs Jyoti Ganesh and Suresh Goda were telling that tomorrow's program we are boycotting that program because of... No. In his presidency only the function is to be conducted here. But they were telling boycott. No, it is up to them. It's a politically, if they should not view this celebration as a party or
keeping the opposition party away from the occasion. We are all inclusive of all the opposition MLAs and the functionaries also. This is celebrating this. Jyoti Ganesh itself, he himself is presiding over the function. What else he requests then? Thank you, sir. Thank you. My personal prediction of today's program at Trivandrum, according to me, it is not by anybody's recommendations or anybody's institution. It is according to me. CM Siddaramaiah ji visiting Trivandrum and attending the meeting, the swearing ceremony of Kerala Chief Minister. So this swearing ceremony is scheduled for 10 o'clock in the morning. So it will be last by 30 minutes or 45 minutes maximum. After that, Siddaramaiah is staying back in Trivandrum, wherein our party president Kharge ji and our LOP, Mr. Rahul Gandhi ji and Venugopal, everybody will be there only. So there may be some discussion about the giving permission for the expansion or reshuffle or for the change of leadership. That can be discussed today only. According to my guessing, it is not from anybody's mouth. Sir, ತುಮಕೂರು ರೂರಲ್ MLA BJP ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ is ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ No, but see, in the event of change of leadership, I prefer Dr. Parameshwar. Even today, I stand by Siddaramaiah. If
इंडियन आर्मी का जो है इतना योगदान रहा है कि उन्होंने बनाया है। पहले तो ये कि हम उनके मशकूर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव लिया। यहाँ पहाड़ी कल्चर रिवाइव हो गया, दिखाया किस तरह से हमारा पहाड़ी कल्चर हुआ करता था। साथ में यहाँ पे वॉर मेमोरियल भी बना है। इससे ना सिर्फ ये कि जो हमारे आम लोग यहाँ पे आते थे, जो अब नई जनरेशन, उन्हें इसके बारे में पता चलेगा, बल्कि साथ में जो टूरिस्ट्स भी यहाँ पे आते हैं, इतने सारे टूरिस्ट, चाहे वो विद इन डिस्ट्रिक्ट हों, विद इन जम्मू कश्मीर हूँ या फिर विद इन इंडिया हूँ, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है दूसरी रियासतों से भी आते हैं, उन्हें भी मालूम पड़ेगा। और ये एक अट्रैक्टिव सेंटर जो और एक बनेगा, और इससे हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारा जो टूरिज़्म है वो और भी बढ़ेगा, उससे और भी फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने यहाँ पे ये बनाया। यहाँ पे पहाड़ी कल्चर सेंटर है, आर्मी म्यूज़ियम है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। खासकर ये कि पहाड़ी कल्चर से लोग जुड़े हुए हैं, या यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, वो उनको पता चलेगा कि कश्मीर का कल्चर क्या था। वो खासकर जो टंगडार वैली है, करना वैली जिसको कहते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा। दूसरा ये कि बॉर्डर में किस तरह से यहाँ पे जवान काम कर रहे हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन यहाँ पे थीम आर्मी म्यूजियम में लगा दिया गया है। इससे हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो आइंदा दिनों में बढ़ जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, खासकर इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पे उठाया हो, और आज जाके यहाँ पे इसकी LG मनोज सर ने इनाग्रेशन की। तो कितने खुश हैं आप इससे? हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमारी यहाँ पे इकॉनमी भी बूस्ट हो जाएगी, और इकॉनमी बूस्ट होने की वजह से जो हमारा नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे थे, चाहे वो ड्रग्स में मुबतला होते थे या किसी और गलत कोई रास्ता लेते थे, जब उनको यहाँ पे एक इकॉनमी का सोर्स मिल जाएगा तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं भटकेंगे। तो बॉर्डर टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि एक पहला इक़दाम है आर्मी का जो बड़ा बनाया उन्होंने। देखिए, जो बॉर्डर टूरिज्म को इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तरफ से सीमा के साथ ही टीटवाल गांव है, जहां पे आर्मी बैठी हुई है और सेना यहाँ पे काम कर रही है। वहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बॉर्डर का बना हुआ है। दूसरा, इस हिल टॉप पे आप देख सकते हैं कि स्नो हर साइड में देखने को मिल रहा है, और हाई ऑल्टी पे ये एक पॉइंट बनाया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टूरिज़्म अच्छा खासा बढ़ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अब टूरिस्ट लोग हैं या टूरिज़्म के साथ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, या ट्रैवल एजेंसीज काम करेंगे, वो अपनी एटिनरी में इस जगह को भी आप शामिल करेंगे, और जिससे यहाँ पे टूरिज़्म को अब बढ़ावा मिलेगा। जो हैं ये अवाम के नाम किए गए हैं। मैं सबसे पहले अपनी आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स अवाम के नाम किए। इनकी वजह से करना में काफ़ी तरक्की, अवामी सहूलियत, और इसके अलावा हमारी जो सकाफ़त है इसको महफूज रखने में ये अहम साबित होंगे। सबसे पहले ये जो शौर्य गाथा स्क्रीनिंग और चेकिंग पॉइंट है, ये करना की अवाम के लिए काफ़ी रिलीफ लेके आएगा। ख़ासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं साधना के आर पार, इनको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले एक तो इंतज़ार और इसमें चेकिंग में बहुत टाइम लगता था, परेशानी होती थी, और ये परेशानी हमारी जब मौसम ख़राब होता था, हार्श वेदर में, ये डबल हो जाती थी। अब एक मनज़्ज़म तरीके से, जैसे हम देखते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे और सेंसिटिव जो जगह होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन काफ़ी एयरपोर्ट पे, उस तरह का एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे चेकिंग भी होगी, और आरामदेह यहाँ पे माहौल भी है, आना जाना फ्री रहेगा, तो इससे हमारे लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी। इसके अलावा एक कल्चर सेंटर जो है हमारा, वो हमारी तहज़ीब और तमद्दुन को और उसकी हिफाजत के लिए बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, जिसमें यहाँ के गुजर, पहाड़ी, सिख और दीगर जो मकामी आबादी है, उनके रहन सहन, कल्चर, रस्म व रिवाज को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए उनको अपनी जड़ों से और अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, जिसे हम सकाफ़ती विरसा कहते हैं, उससे जोड़ के रखेगा। इसके अलावा एक जो वार म्यूज़ियम और वार मेमोरियल है, वो हमारे शहीद जवानों, ऑफिसर्स की कुर्बानियों की याद हमेशा हमारे लिए ताज़ा रखेगा, जिसमें यहाँ की करना की तारीख़ और अवामी किरदार को एक शाइस्ता तरीके से बताया गया है। तो जो भी शख्स यहाँ आएगा, इसको देख के उसके दिल में हुब्बुल वतनी
और फ़ख्र का जज्बा ज़रूर पैदा होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी आर्मी का कि ये प्रोजेक्ट करना के लिए एक तोहफ़ा है।
Minister is coming to Rome tomorrow for his first bilateral visit, and his visit is an opportunity for us to review our cooperation with Italy and to also be more aspirational about what we want to do with Italy in the future. Italy is a very important member of G7, G20, and they are one of the most industrialized countries in Europe. So we are hopeful that Prime Minister's visit and discussions will further strengthen cooperation and result in some substantive outcomes. What would be the PM Modi schedule during visit in Italy? So Prime Minister will be reaching Rome tomorrow evening, and the day after, on 20th, he will have a meeting with the President of Italy, His Excellency Sergio Mattarella. After that, he will have a bilateral meeting with the Prime Minister, Ms. Giorgia Meloni. Both of the Prime Ministers will have an interaction with select business leaders, and towards the end of the visit, he will go to the UN body, Food and Agriculture Organization, for an engagement there. It is a compact visit, but one that will have a focus on substantive discussions and outcomes. What agreement would be the agreed open between India and Italy during the PM Modi visit, ma'am? So you will have to wait till 20th May for a list of the agreements, but I can say that the visit is aimed at some key areas of cooperation. First, of course, is to further increase the trade and investment between the two countries. We are also inviting Italian companies to look at India for long-term presence and long-term business collaborations. Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Third, it will be mobility, and we will look at how to increase the flow of talent and knowledge between the two countries. Of course, maritime security and ports is another area. We hope to share the list of outcomes and others with you on 20th. What are the potential sector of the convergence for the Italy and the India? So firstly, I would say that both countries share democratic values. We are committed to global peace and security, and we are also committed to values such as inclusive growth and development. Secondly, in the current geopolitical environment, both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally. As the Indian ambassador to Italy, how would you like to take the relationship forward? So our embassy's mandate here is to see that the relationship is based on a strong foundation. Second, we want to diversify the number of stakeholders in the relationship, which means that more industry stakeholders, academic collaborations, people-to-people linkages, cultural linkages. Third, we want to also see Italian companies and business stakeholders considering India as a long-term partner, not just as a market, but as a country which can strengthen their competitiveness, as a country which can build on technology partnerships and benefit both countries. Thank you, ma'am. Namaste. मैम, प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के शॉर्ट ट्रिप पे के लिए आ रहे हैं, आप इस विजिट को कैसे देखते हैं? Namaskar.
प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय यात्रा है और उनके चर्चा यहाँ पे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति से होंगी। वो यहाँ के सेलेक्ट बिजनेस लीडर्स को भी मिलेंगे। हमारे देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप घोषित किया गया था 3 साल पहले। हमारी ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के विज़िट के दौरान हर क्षेत्र का रिव्यू होगा, जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में, और रक्षा, क्लीन टेक्नोलॉजीज़, बिजनेस, मोबिलिटी और कल्चरल एंड पीपल लिंकेजेस, इन सब में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये विज़िट अच्छे मौके पे हो रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न हुआ और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो, और हमारी उत्पादन करने की क्षमता, हमारे वर्क फोर्स की क्षमता, इसकी यहाँ पे पहचान बढ़ रही है। तो ये विज़िट अच्छा मौका है हमें बिज़नेस कोलैबोरेशंस पे फोकस लाने के लिए, और दोनों लीडर्स ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बायलैटरली